Just raise hand. Ministry of Human Resources Development is no more now. So I told you about secondaries. We are going to enter 9th to 12th. In secondaries, 21st century skills. 21st century skills. The government is really serious about this. 21st century skills. You'll put a question, what is 21st century skills? Anybody? Anybody would like to share with me some 21st century skills examples? You should be very confident. Earlier you were so good, confident. Sandeep sir? Yes sir. तुझे डराते नहीं दत्ते सारे? Okay. So, what is 21st century skills? Anybody? You know, coding. How many people know about coding? Just raise hand. You know what is coding? For example, a student is willing to go for coding learning. The honorable school management has to arrange coding teachers. Okay. I give you one example. There is a district Jhajjar in Haryana. Anybody heard the name Jhajjar? Yes. Near Delhi. There was a boy who was just 9-year-old, and in lockdown his dad purchased one mobile for his online classes, a smartphone, and that boy learned so many things from school teachers, apart from school teachers. That boy inspired me rather to tell that YouTube Acharya. There was a Drona Acharya. Drona Acharya refused Eklavya. Reason you all know. But YouTube never refuses. YouTube says, come on. There were so many Acharyas you will get. One day he was learning some subject, an advertisement appears, learn coding. He did not skip the ad. He listened that ad and he learned coding through YouTube only. And you know, he made 3 apps. On Good News TV, GNT, I was listening his interview. He has got a turnover of more than 4 crore rupees. Age is just 12 years now. You might have seen that children are more now dominating over the parents who are not aware of the technology, software technology and internet. Do you agree? Because they are updating them. That is one of the 21st century skills. There was a time we have to learn guitar from a teacher. Now you can learn guitar from YouTube. Piano, santoor, harmonium. So 21st century skill is really an amazing introduction. Gone are the days, nobody is interested what we were being taught. We must know our roots, we must know our history, because if we forget that sacrifications, we forget so many things and our country is gone. So dear teachers,
multidisciplinary study. MDS. Anybody knows about multidisciplinary study? Yes, please come here. Be quick. We are having just 20 minutes. Anji. Multidisciplinary study means if you teach your subject and if you find any one point which connect the other subject with your subject. If you teach environmental study in a social science and if there is any point, don't only teach only your subject. Your study should be such that which connected also other subject with your subject. अगर आप अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो और उसमें कोई पॉइंट आ रहा है जो सिर्फ अपनी सब्जेक्ट को ही नहीं पढ़ाना, अपनी स्टडी को ऑल टीचिंग के साथ और अदर सब्जेक्ट्स के साथ भी उसको टच करके पढ़ाना है, उसके साथ जोड़कर पढ़ाना है. सिर्फ बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, ऑल राउंडेड डेवलपमेंट होनी चाहिए. अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, एक चैप्टर पढ़ा रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं सोशल साइंस में कोई सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, हिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, मान लो रिवॉल्ट ऑफ 1857 ही मैंने टीच करवा रही हूँ, ठीक है. तो मैंने उस सब्जेक्ट में सिर्फ स्टोरी नहीं बच्चों को समझानी कि 1857 का रिवॉल्ट कैसे स्टार्ट हुआ, झांसी की रानी ने स्टार्ट किया या किसने स्टार्ट किया. मैंने उसमें उस सब्जेक्ट के ज़रिए स्टूडेंट्स को वैल्यूज़ भी सिखानी है कि झांसी की रानी में पैट्रियटिज्म की फीलिंग थी तो अकेली ही उससे फीलिंग के साथ आगे बढ़ी और इतने लाखों लोगों को उसने इंस्पायर किया इस रिवोल्ट के साथ जुड़ने के लिए. मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का मतलब होता है कि सिर्फ अपनी जो स्टडी है लिमिटेड नहीं रखनी, एक दायरे में नहीं रखनी, उसको एक्सपैंड करना है ताकि स्टूडेंट्स आपके सब्जेक्ट के साथ अदर वेरियस थिंग्स को भी अंडरस्टैंड कर सके. Well explained. Your good name, ma'am? पूनम शुक्ला. Poonam Shukla. Big round of applause for ma'am. Then there is one point in 21st century skill while teaching that is called development of the critical thinking. Actually, dear teachers, we are just discussing so many things. Critical thinking, anybody just would like to say something about the critical thinking? Poonam ma'am is again willing to come and say something. No? Critical thinking. Yeah. You want to say something? I think you have something. Sir, you can ask for many others. No. No, you will explain about that MDS. Any idea about critical thinking in your mind? Critical thinking. Be seated only. Hanji. Your thinking should be broad. Right? And you don't think about any one point in a limited circle. You should also think about the right positive side, negative side of every aspect in your life. Okay, very nice. This is what called is critical thinking. And student should get to know what he is doing. He's learning guitar. He should learn chords. He is learning harmonium. He should learn harmonium is playing. He should sing also. If he is singing, the lyrics should have an expression on his face also. Actually, this place is a wonderful place. I was told by Kalia sir that Lasara is a place where Prithvi Raj Kapoor, Shashi Kapoor was, once upon a time after the partition lived here. So, big round of applause for Lasara itself. What a great people you had given to the Indian cinema and the other world cinema. Great people. Particularly theatre people also they were. Anyway, so one point is there, that point is leadership. We should develop a quality of leadership in a child. We should not suppress that quality of leadership in a child. Means, right now,
like Honorable Ma'am came here and she has kind of an allocution with you. She exchanged her concepts of MDS. This is what you should also develop in your class. You should know down. You should. I'll tell you one thing. This is, I don't know whether it is an NEP or not. From my side, instantly I thought, make one register. Make a file of student like a homeopathic doctor. Note down Supreet, note down Jaskirat, note down Soumya, note down this. And daily, note down whatever the activities you particularly notice in your student in the class. Okay? When there is a PTM should be very healthy. It should not be full of sarcasm and taunts. Make the parents feel proud. Even your child is not doing good, no problem. So, note down the behavior. Note down the mood swings. Note down the changes you are finding in the students' behavior, activities and learning skills. Do it. Then we will discuss it after few months or days whenever I come. That register should be with you. अभी तो मैंने बोल दिया कि आपने एक रजिस्टर लगाना है. आपने भी इमोशनल होकर बोला यस लगाना है. उसके बाद एक बच्चे को एक पेज अलॉट कर देना. आपने बोल दिया यस. असली काम क्या है? उसको कंप्लीट करना. वो बहुत टफ है. जो करेगा उसकी कनेक्टिविटी होगी. वो टीचर और क्लोज टू द स्टूडेंट हो जाएगा. उसको पता लगेगा अब एक बच्चा है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, उसे आंख मत उड़ाओ उसको. मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं. आई वॉज वेरी शाय, वेरी बैशफुल, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन, कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए. यू कैन बिलीव दिस कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए क्लास में. तो मैं पढ़ता था एक डर से कि क्लास में जब मैम बोलेगी कि 10 आउट 10 मार्क्स हैं तुम्हारे 100 में से, वेरी बैड, वो नहीं मैं सुनना चाहता था और मुझे उसका पढ़ाया अच्छा नहीं लगता था. तो सब्जेक्ट से भी नफरत हुआ कि मैंने ये बायोलॉजी लेनी नहीं है, मेरे को पसंद ही नहीं है. आई गो विद द मैथ्स, मैंने बायोलॉजी लेनी नहीं है. यू नो, हो सकता है अगर मेरा बायो का टीचर मुझे पैम्पर करता, मेरी स्किल्स को नोट करता, मेरी लीडरशिप को नोट करता एंड सो मेनी अदर थिंग्स को नोट करता, तो हो सकता मैं डॉक्टर बन जाता. तो शी इज स्किल्ड डॉक्टर इन मी, है ना. मुझे मैडम से कोई शिकायत नहीं है. हो सकता है उसका टेम्परामेंट. कई टीचर्स क्या होते हैं, बड़े खड़ूस बनने की कोशिश करते हैं क्लास में आके. पूछो सर तुम आप ऐसा क्यों बिहेव करते हो. मैं नाम नहीं लेता. वन ऑफ माई फ्रेंड इज वेरी खड़ूस. कहता विपन मेरी क्लास में कोई बोल के दिखाए. मैंने कहा तू ना सेल्फिश जाइंट पढ़ लेना है कभी, रस्किन बॉन्ड का. बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर रहा, उससे डर के बैठा है ना, तो बच्चा कहां से सीखेगा. कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नॉट डिस्करेज योर चाइल्ड. इफ योर चाइल्ड वांट्स टू communicate. Some children are extrovert. They communicate in class. मैम ये देखो मैम कैसा है, मैम ये नहाया नहीं, स्मेल आ रही है मैम. ठीक है, ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं. एक इंट्रोवर्ट होते हैं. सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, बस हम वहीं के वहीं रह जाए. वो चुपचाप मरे से रहेंगे, भारतीय अबला प्राचीन नारी की तरह. अब की नहीं, अब की तो नारी जबरदस्त है, राइट. तो कम्युनिकेशंस बच्चे के साथ होना बहुत जरूरी है. आइडेंटिफाई करो कि ये बच्चा बात नहीं करता क्लास में, तो उसको बाहर दोस्ती डालो, लंच इकट्ठे करो उसके साथ. कोई फर्क नहीं पड़ता. ये बड़ा गलत कंसेप्ट है कि बच्चों के साथ डिस्टेंस रखो, बच्चों से दूरी रखनी चाहिए. क्यों? वो रिस्पेक्ट नहीं करते. मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अगर आप दिल से पढ़ा रहे हो, आप बच्चे के साथ घूमने भी चले जाओ, पिक्चर भी देख लो, तो भी बच्चा आपकी रिस्पेक्ट पूरी करेगा. उसको डांटोगे ना आप, वो पता क्या बोलेगा, सॉरी मैम मेरी गलती थी. और उसको आप डांटोगे ना, आप बोलेगा मैडम समझ देगी, ये मैंने गाला कर दी, सीखी तैसी, स्कूटर पंचर करूंगा.
Okay, it means something is wrong in you, not in the child. And on the top, 90% problem is not with the children. 90% problem is in the parents who pamper their child, who takes the side of the child. So dear teachers, critical thinking, leadership, communications and cooperations. This is also very, very important. We have to cooperate with the student, and if we say it is called a CDP, critical thinking, and decision making also. We should create a quality of decision making in the mindset of the students. For example, a student is deciding something कि आज कुछ करते हैं हम लोग, चलो आज बाहर ग्राउंड पे चलते हैं, ठीक है, तो अर्पित तुम लाइन बनवाओगे, ओके। ऐसे बच्चे को सेलेक्ट करो जो बहुत वीक है और जो बोलता नहीं है। मैं नहीं करूंगा, अर्पित बेटा ले, डराना नहीं उसको, मैं तेरे साथ हूं, चिंता ना करता हूं, मैं इसको बोलूंगा ना बाद में, स्कूल के बाद, रिसेस के बाद मेरे को ये मारेगा, बेटा तू कोई नहीं मारेगा तेरे को, मैं देखता हूं। और जो ऐसा है उसको अपने पास पकड़ लो। तो दैट हाउ विल यू कम टू नो व्हेन यू मेक दैट डायरी और रजिस्टर एंड यू नोट डाउन द बिहेवियर ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। एंड कभी कभी रात को नींद ना आए तो उसको खोल के भी देख सकते हो, अच्छा ये संचित है, इसका क्या करें यार, ये पढ़ ही नहीं रहा, ठीक है। पेरेंट्स को मत बोलो आप, जब आप पेरेंट्स को कम्युनिकेट करते हो ना, वो पता की कहणगे, असी थोड़े कोल क्यों भेजा फिर, हैं जो असी पढ़ाना है, वाई वी नीड टू सेंड इंडियन फीसा देने की लोड़ है, बस दा भी पैसे देने, ड्रेसा हो गई, कपड़े लै, तुसीं तो आईया चलिया भाषण दे के, है ना। Gone are the days, earlier the teacher's image was such that के भैन जी है, साग लेके जाओगी, लस्सी ले जाओगी, स्वेटर बनोगी, चले जाओगी। Now gone are the days. You have to make those students your fan by your mode of ways, understanding. Don't behave like a villain with the children. बच्चा आपको पसंद नहीं करता, आपको टीचर को गुस्सा आता है, आपने उसको थप्पड़ मारा, मान लो, वैसे तो मारते नहीं, डांटा, उसने आंखें घूर के देखे ऐसे। अब मेल टीचर है, फीमेल का तो मुझे पता नहीं, मेल टीचर है, खबर दे तो बहुत चल नहीं, उसको और प्यार करो कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, तुम ऐसे क्यों करते हो। कहीं ना कहीं पेरेंट्स की लेगेसी को कैरी ऑन कर रहा है। बहुत अजीब सा पॉइंट ले रहा हूं, पेरेंट्स, मम्मी पापा 180 डिग्री पे हैं, 99%। वो कहते हैं ये बच्चे हैं ना जो स्लिपर का काम कर रहे हैं, जो लकड़ी नहीं होती वो सीमेंट का, हम तो 2 रेलगाड़ियां कब की अलग हो जाती, ये इन्होंने बांध के रखा हुआ है। दिस इज द रियलिटी नाउअडेज। Children are there, parents have no time, multiple problems are there, and multiple problems crop up because grandparents are neglected. If you tell kids कि कल सारे बच्चों ने दादा दादी के साथ खाना खाना है और व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो डालनी है, और 20 मिनट्स डेली दादा दादी के पास बैठ के बातें करनी है, इससे क्या होगा, ग्रैंड पेरेंट्स विल गेट कनेक्टेड विद देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, अदरवाइज दे फील नेग्लेक्टेड, और उनके अंदर एक आइसोलेशन आ चुकी है। दादा दादी कमरे में बैठे रहते हैं, उनके सुपुत्र और सुपुत्र की पत्नी वो बोलती मेरे पास तो रोटी बनाने तो टाइम नहीं, पहला मैं ऑफिस तो आई हूं, मैं रोटियां बना रही हैं, हूं मैं बुढ़ी दी गल्ला कित्थों सुना। वो कहेगा यार छड्डो परे, अच्छा मम्मी दादी मैनू कह रही सी भी तेरी मां तो आंदी नहीं, खबरदार जे तू उहदे कोल गई, तू नहीं जाना,
दादी कोल तक बिल्कुल ही नहीं जाना. दिस इज वेरी नेगेटिव. इफ द चिल्ड्रन आर गोइंग टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स, खाना खिलाया, बॉन्डिंग होती है. अगर दादी बोलती है कि बेटा तू मेरे पास ही सो जा, सोने दो. करके देखो, दुआएं मिलेंगी आपको. यू नो, लर्निंग टू लर्न हमारे क्या है? लर्निंग टू अर्न. ये नहीं होना चाहिए. लर्निंग टू लर्न. हम सीखने के लिए सीखें. हमारे देश में क्या है? तू तो बस धक्के खाएगा. पढ़ लै कि चंगी नौकरी लग गई सरकारी, पहले ਉਹਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ लगती है पोलियो डीपीटी ਦੇ ਨਾਲ सरकारी नौकरी लगी है, लगी ਤਾਂ तेरा फ्यूचर है. कम ऑन, लुधियाने ਵਿੱਚ किन्ने पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं. देर आर सम पीपल हु आर ग्रेजुएट, वेल ग्रेजुएट, ऑक्सफोर्ड तो भी पढ़े हैं, हार्वर्ड तो भी पढ़े हैं. सो यू शुड टेल देम metacognition. You know what is metacognition? I'm using some words. Shukla ma'am, I expect that you are going to explain this. Parasangyan. Spend time on critical thinking, innovation. बच्चों को इनोवेशंस क्रिएट करो. और एक बच्चे ने, मैं थोड़ा अपनी गल दसदा, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग बट आई डोंट नो द ABC ऑफ सिंगिंग. तो मैं 6th क्लास 7th क्लास हुंदा सी ते मैं पिछे बह के ना मुंडे नूं कहंदा सी तू कंन ला बेंच नाल, मैं ढोलकी बजाना देख कैसा म्यूजिक आंदा है. किन्ने ने किया? किसी ने. दैट इज वेरी मेलोडियस. असीं शोले फिल्म की कहानी सुनानी विद म्यूजिक. तेरे के होगा कालिया सरदार, मैंने नमक खाया गोली खा, ठीक, एंड सो ऑन. वो लड़के ने सोचा भी इहदी बेइज्जती होएगी. मॉर्निंग असेंबली, देयर वाज वन टीचर, मिस्टर ईश्वर चंद, ही वाज आवर स्पोर्ट्स टीचर. हुण तुहानूं पता भी DPI सारे थप्पड़ पहला मारदे बाद च पुछदे हैं. तो कहते सारे गाने गांदा है. उन्होंने मोरा मेरे खिच के खड़ो. मैं कहा मास्टर जी मैनू नहीं, मैं नहीं जी, मैं मुंह खोर खिच के, आई हैव टू सिंग. फर्स्ट टाइम आई ट्राइड, everybody was listening my voice. I feel oh great. वो कहते कुब्बे नूं पई लत्त, वो सीधा हो गया. तो कॉन्फिडेंस आ गया. उन्हें मेरी बेइज्जती करने वास्ते बोलिया सीगा. एंड टीचर कहता चलो वो नहीं हुआ तो फनी हो जाएगा. बट इट वॉज नॉट ए फन. लाइक माई लॉर्ड द बेबी इज ए हाईली मूविंग नरेटिव सर्विस डिवोशंस एंड सैक्रिफाइसेस. तो मोस्ट ऑफ द टाइम you people do the best when other do not expect from you and you frustrate them, then you get confidence. कि वो मेरी जो पंजाबी च कहते हैं उन्होंने मेरी बेइज्जती करनी सी, उल्टा मैंने दी करती, मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया. सो कोलैबोरेशन प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चे जब इकट्ठे बैठते हैं तो उनमें उनको कोलैबोरेट आप करना सिखाओ. और एक ICT इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है. हमारे जब हम स्कूल में पढ़ते थे, आज भी पढ़ ही रहे हैं, बोर्ड पे जाके न्यूज़ लिखते थे. दैट वाज इंफॉर्मेशन एट दैट टाइम आल्सो. बट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड adaptability, these are the best things. You know what is the report card of a students? No comparison with others. Comparison of a student with his or herself, with himself or herself. No comparison with the other students. और क्लास में आपने कभी बोलना नहीं, देख वो कितना अच्छा कर रहा है, तू नहीं कर रहा ना. बेटे तू पहले, तेरे को पता है तू पहले ऐसे से लिखता था, अब तू ऐसे से लिख रहा है. ये मेरे साथ हुआ है. When I started teaching, I used to write on the board like this. My students still said कि sir you teach very good. तो धीरे धीरे एंगल सीधा होता गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया. तो एक पहले क्या होता था, पेपर पेंसिल कल्चर था. हमारी असेसमेंट थी पेपर पेंसिल कल्चर. पेपर पे क्या लिख रहा है, पेंसिल से क्या. आजकल नहीं करना आपने. आजकल आप अदर असाइनमेंट बनाओ. PTM में बोलो ये इसकी ना मैम यूनिफॉर्म बहुत ड्रेस अच्छी होती है,
बड़ी आयरन होती है, वेल प्रेस्ड होती है, मम्मी खुश हो जाएगी। मैडम पता मैं कितने बजे उठती हैं? 5 बजे उठती हैं। 5 बजे उठ के पहले उन्होंने कपड़े प्रेस करके फिर टिफिन पैक करके फिर मैं अपने लिए तैयार कर दिया। यू आर द ग्रेट मदर। स्टार, आइसक्रीम, whatever it is, try to distribute on the notebook. वैसे नहीं, ओके। सो नो रिजिड व्यूज मत बनाओ आप, फ्लेक्सिबल व्यूज होने चाहिए आपके। एंड यू शुड हैव परख। एनीबडी विल डिफाइन परख? B for performance, A for assessment, R for review, A for analysis, K for knowledge, H for holistic development. It's all recorded and I'll share the link with you. P for? A for? R for? A for? K for? H for? Now, I finish with this. There are a lot of things to be yet told to you, but I finish with this. And you promise me all, you are telling your students that you should spend time with your grandparents. You should also tell your children also that you should also spend time with your father-in-law, mother-in-law, irrespective of what they are. That saas bahu sajish nahi karni. Okay, one thing more, very important. This session I've covered around 60 to 70%, but we really discussed so many, points which were totally in a very different way. So this session you will have on, if you just go to YouTube, fill up my name along with the subject Vipin Sharma Physics. So this will be available on YouTube. So once I reach Patiala, it will take 1 hour or 2 hours to upload all this. So dear students, teachers, एक announcement है मेरी तरफ से. Anybody who is in 11th and 12th, 9th and 10th wants any free education in physics, I don't charge a single penny. Teachers? So no problem. तो सर मैं बताता हूँ कि that you can convey to anybody irrespective of your school. So thank you very much. This session is 60% discussed. Lot of things are yet to be there. Hope we will have one more session. Do you? ये मरी सी आवाज में आया. Do you all want? Yes. Okay. Thank you very much. I know that it's a time to go, 2:45. Anybody else to say anything, please? Yes, ma'am. Come here. No, come here, ma'am. Thank you, sir. It was really an unforgettable session today we had. We learnt a lot from you. We extended our knowledge. So on behalf of our NIRMAL Sagar Parivar, we thank you, sir. Don't say before camera you learned, really learned? Yes, of course, we learnt a lot, sir. देखो जब मैं हिमाचल च जाना ना तो थे मैं बोलता ना झूठ बोलेगा तो कुत्ता काटेगा. एक बच्चा बोलता सर कुत्ता कैसे काटेगा? मैं कहा कोई काटेगा, कोई केस आया इस तरह. दूसरा, सभी लोग, do you all like this session? We really enjoyed it, sir. Really? Yes, sir. नहीं हो पैसे वाली ताली नहीं बजानी है. So आप करांगे और भी, we will be, I'll be coming again if invited. And इतना बढ़िया सर ने हमें पनीर पकौड़ास and sandwiches खिलाए. Thank you principal ma'am, and I wish that you say something, sir, please. Thank you. Teachers? Please listen. Dear teachers, I am really indebted to Mr. Vipin Sharma ji, whose schedule was quite hectic and tight, but he acceded to our request and gave us the time that we wanted from him.
On behalf of the governing body of the school, on behalf of principal ma'am and all the members of staff, I am really very thankful to him, and I assure him that we will remain in touch, and I will invite him time and again to this institution so that my members of staff may learn from him. Who is a good teacher? The father of English poetry, Geoffrey Chaucer, in his poem once wrote, "A good teacher is a person who learns gladly and teaches gladly." Wow. Mr. Vipin Sharma is such a teacher. He loves his job, he is passionate about his work, and this is the thing that I want all of our colleagues should learn from him. Secondly, you should be very careful in the selection of words. You should be ready with examples. Ma'am Shukla correctly told what interdisciplinary approach is, but she lacked examples. A doctor was once teaching his students, and he was talking about malaria and typhoid. He wanted to clarify the things. He said, malaria is like a cobra. Malaria is before you. Temperature immediately at 102, 3, 4. Body starts trembling. This is the basic sign of malaria. But typhoid is like a snake in the grass. You will have to be very careful. It is not easily discernible. So you should be clear about your approach and ideas whenever you go to your class. This is the message that you must all get from Mr. Vipin Sharma ji. Once again, I am very thankful to him that he has spared a lot of time for our institution, and once again I thank him. Thank you so much. गॉड ब्लेस यू ऑल. जब भी आप बुलाओगे, जो भी मेरा गेयर होगा ना, उसी गेयर में बैक में आ जाऊंगा. एंड एक मैं प्रॉमिस करोगे, एक प्रेयर है मेरी, ठीक है? बोलो, मेरे देश दे खेत जंगल हमेशा हरे भरे रहन, मेरे देश दी नदियां नाले आबू हवा साफ रहे, असी महान शहीद भगत सिंह, उधम सिंह, स्वामी विवेकानंद ते दशम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी सिक्ख्यावां ते हमेशा चलांगे. असी वाहिगुरु अगे अरदास करदे हां, साडे देश दे राजनेतावां नूं सदबुद्धि मिले, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ 2 ਘੰਟੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ.